Hello students, welcome to my channel. In last video of atoms and molecules, we have discussed what was the atomicity and what are the ions, cations and anions. Positively charged atoms were called what? Cations, and negatively charged were called anions, plus and minus, and there the interaction. Now the topic of discussion is valency. So right here I have shown you the valencies of different atoms for like chlorine 1, nitrogen 3, magnesium 2, calcium 2, aluminum 3, carbon 4, carbonate 2, nitrate 1, sulfate 2, ammonium 1. Look at the formula. This is called Cl minus. Nitrogen, you will get valency which will be in -3 form because it will get 3 electrons. Okay, either in case of ions or in case of covalent bond, it will have the valency 3. Magnesium, it is +2 state, right? Calcium +2, right? And that is the valency also 2. In valency, plus or minus sign is not taken, but the only digit. Carbon and aluminum it is +3. And why is that so? You can just configure the electronic configuration and you can see the valency. Aluminum is 3, carbon 4, valency 4, carbonate CO3, it is 2 minus, that is why the valency is 2. Nitrate NO3, nitrate having -1 charge, that is, and valency is 1. Sulfate is what? SO4 -2 charge, that is why valency is 2. Ammonium ion, ammonium is what? Ammonium NH4 plus charge, and the valency is 1. How many the charges? That is the valency. So these are some examples and having valency. Let's start with the discussion of valency and how to write the formula of any compound or ion. We know that atoms of an element combine to form a compound. Every atom has a specific combining capacity. This combining capacity of an element is known as valency. For example, consider a water molecule. It has 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. This shows that the combining capacity of oxygen is 2 and takes 2 hydrogen atoms. Similarly, sodium monoxide has 2 atoms of sodium and 1 atom of oxygen. Thus, the combining capacity of sodium is 1 and oxygen is 2. And that is why it is written as Na2O. Means one oxygen is balanced with 2 sodium ion. And what is the charge? Oxygen having 2 minus charge, sodium having 1 plus charge. See, 2 minus are being balanced with 2 plus charges. That is why this formula is written like this. Here the compound is formed by 2 different elements, and such compounds are called binary compounds. तो different element हैं तो binary compound. Some compounds have more than 2 elements or a group of elements as ions. For example, an OH ion. It consists. Why it is OH -1 ion? देखें जरा एग्जाम्पल को प्रॉपर्ली समझें. ऑक्सीजन की खुद की वैलेंसी कितनी होती है? -1. अब ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन तो है, राइट? एक हाइड्रोजन तो है. अगर ऑक्सीजन की अकेले वैलेंसी होती है, देखो 2 माइनस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, यानी कि इलेक्ट्रॉन मतलब होता है भाई चार्ज होते हैं. 2 माइनस चार्ज का मतलब होता है ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. तो एक इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस हो गया, राइट? एक हाइड्रोजन आ गया तो एक तो बैलेंस हो गया, राइट? इससे ये प्लस वाला बैलेंस हो गया, तो कितने बचा? अब एक माइनस बचा ना, इसीलिए हाइड्रोक्सिल क्या लिखा जाता है? OH माइनस आयन. तो ये जो माइनस आयन किसके लिए होता है? बेसिकली ऑक्सीजन के लिए होता है. अगर ऑक्सीजन को ऐसे लिखा जाए सिंगली, तो इसके पास 2 चार्ज होते हैं माइनस पे. चार्ज का मतलब होता है इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. 2 इलेक्ट्रॉन जब मिल जाएगा तो इसके ऑक्टेट कितना हो जाएगा? 8 कंप्लीट हो जाएगा. इसीलिए कहते हैं OH पे 1 माइनस चार्ज लगा होता है, तो इसका वैलेंसी भी क्या लिखी जाएगी? 1 लिखी जाएगी. आगे देखें, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन इज नीडेड. Of hydrogen and oxygen atom, and its valency is 1.
Here are the valencies of some elements. Chlorine has the valency of 1. The valency of magnesium and calcium is 2, while nitrogen and aluminium is 3, and that of carbon is 4. A nitrate ion and an ammonium ion show a valency of 1, whereas carbonate and sulfate have a valency of 2. The knowledge of valency helps to write the formulae of compounds. A formula is the shorthand representation of a compound. For example, consider a water molecule. It has hydrogen and oxygen. The symbol of hydrogen is H and oxygen is O, and its formula is H2O. Let's learn to write a formula. वैलेंसी इंटरचेंज कर देते हैं. Formula. To write the formula of compounds, we follow a set of rules. Let us write the formula of calcium carbonate. First and foremost, identify the elements present in calcium carbonate. They are calcium, carbon, and oxygen. Identify the cation and the anion. In calcium carbonate, calcium is the cation and carbonate is the anion. Next, identify the valency of the cation and the anion and place it just above the symbol. For example, the valency of calcium is 2 and the valency of carbonate is also 2. Then cross-multiply the valencies. Now write the numerals as subscript right after the respective symbol, Ca2 and CO32. In case of calcium carbonate, both देखें वैलेंसी क्या है कैल्शियम की वैलेंसी कितनी हो गई. आपने कहा इस पे 2 चार्ज लगे हैं तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी. ऑफ कोर्स कार्बोनेट के पे क्या लगे हैं 2 माइनस चार्ज लगे हैं. करेक्ट. तो वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी. अच्छा, तो जब वैलेंसी लिखी जाएगी अब इस कार्बोनेट की वैलेंसी इधर ले आएंगे. करेक्ट. इसको देखेंगे ध्यान से और इसकी वैलेंसी इसके पास ले आएंगे तो क्या लिखा जाएगा Ca2 और CO3 2. जब वैलेंसी सेम हो जाते हैं तो उन्हें कट कर देते हैं तो पूरा फार्मूला क्या लिख दिया जाएगा CaCO3 ओनली. एक्चुअल में होता क्या है Ca2 CO3 2 ऐसे लिखा होता है, लेकिन सेम वैलेंसी होने के नाते ये क्या हो जाएंगे ये कट हो जाएंगे क्योंकि सेम वैलेंसी हमेशा इग्नोर हो जाते हैं. देखें the valencies are 2, hence the formula is CaCO3. अब एक चीज़ और समझ लें, कार्बोनेट कैसे लिखा गया है. कार्बोनेट पे 2 चार्ज कैसे आ गए 2 माइनस चार्ज कैसे आ गए. देखें कार्बोनेट CO3, एक बात तो क्लियर हो गई, एक ऐसे डबल बॉन्ड लगा है कार्बन से और ये 2 ऑक्सीजन लगे हैं ऐसे. करेक्ट. अब जरा ये ऑक्सीजन देखो, इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की देखो हर ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, लेकिन इसने पीछे कार्बन से 2 बॉन्ड बना लिए. हर एक बॉन्ड से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो दूसरे बॉन्ड से दूसरा हो गया. तो यहाँ तो कोई चार्ज नहीं, यहाँ कितना है यहाँ पे 0 चार्ज. करेक्ट. अभी ध्यान से देखेंगे इस ऑक्सीजन ये वाला जो ऑक्सीजन है इसने कार्बन से एक बॉन्ड बना लिया. इससे क्या हुआ इसका एक चार्ज बैलेंस हो गया लेकिन एक चार्ज अभी भी रह गया माइनस का. इस तरह ये वाला भी ऑक्सीजन भी क्या है इसने एक बॉन्ड तो बना लिया तो एक चार्ज बैलेंस हो गया लेकिन एक माइनस तब भी रह गया. इसीलिए जो पूरा फॉर्मूला बनता है वो क्या लिखा जाता है लाइक दिस CO3 2 माइनस चार्ज. किसके पास माइनस चार्ज लगे हैं ऑक्सीजन के पास लगे हैं. इसे प्रॉपर्ली देखेंगे, कोई भी फॉर्मूला लिखा होता है चार्ज के फॉर्म में लिखेंगे. नेक्स्ट. For compounds formed with polyatomic ions, the ion is enclosed in a bracket before writing the number of units. For example, ammonium sulfate. It has both ammonium and sulfate ions. The valency of an ammonium ion is 1 and sulfate is 2. When we cross-multiply, ammonium has a subscript 2. This 2 is written outside the bracket. There is an exception for some of the metals, which exhibit variable valency and are named accordingly. For example, copper shows 2 different valencies, 1 and 2. In such a case, the compound formed with lower valency is called cuprous, and the compound is cuprous oxide, that is C. ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है क्यूप्रस का,
ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला दिस वन, इसमें कैसे है, इस पे वैलेंसी इसकी +1 है। ऑक्सीजन की हमेशा कितनी होती है -2 यहाँ पे इस केस में। अच्छा यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ एक बात तो क्लियर हो गई, ये ऐसे बना होगा क्योंकि Cu2+ रहा होगा, करेक्ट, और ऑक्सीजन भी -2 रहा होगा, तभी तो वैलेंसी कैंसिल हो गई। इसीलिए ये क्या बन गया, Cu लिखना चाहिए था ऐसे, Cu2O2, राइट, Cu2 लिखना चाहिए था, सेम वैलेंसी होने कट गए तो क्या बन गया, केवल CuO। इसलिए जो लेस वैलेंसी वाला है, कॉपर की जो लेस वैलेंसी है उसका हमने नाम क्या दिया, क्यूप्रस, और कॉपर की जो ज़्यादा वैलेंसी है ये +1 है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है +2, राइट, तो ये क्यूप्रस हो गया, ये क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक। ये नाम याद रखेंगे, क्यूप्रस कब लेते हैं टर्म और क्यूप्रिक कब लेते हैं। Cu2O होता है क्यूप्रस ऑक्साइड और CuO हो जाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। U2O. On the other hand, copper with valency 2 forms cupric oxide, CuO. Similarly, iron also exhibits variable valency. दो हैं इसके पास। Iron with a valency of 2 is ferrous and iron with a valency of 3 is ferric. और हमारे ब्लड में जो आयरन होता है वो ये होता है फेरस वाला। कौन सा होता है, फेरस। हमारे हीमोग्लोबिन में Fe+2 होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीम क्या दिखा रहा है टर्म, आयरन के लिए, ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन। तो हमारे ब्लड में जिसको बोलते हैं आरबीसी, आरबीसी के पास एक खास पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो क्वेश्चन बनता है कि हीमोग्लोबिन में किस टाइप का आयरन है, फेरस है या फेरिक है, तो ऑफकोर्स आंसर होगा फेरस वाला। दैट इज द आंसर।